reading culture must start at home. I started reading when I was, I think, 7, 8 years old. My grandfather, he gave me my mother's Enid Blyton collection. Both my parents used to work, and he gifted me those. As मैं school से आता था तो पढ़ने के लिए instead of watching cartoon. He didn't push me. He just gave it to me, and he went like, these were your mother's. They belonged to her when she was a child. And then I started reading them, and I've never looked back. If a child sees their elders or their siblings reading, they might get interested and they might start reading as well. And दूसरा, of course, थोड़ा सा schools का भी इसमें role play होता है, because reading outside of books that they assign or जो syllabus में है, it's seen as critical thinking or seen as a waste of time. हाँ, हमने इंग्लिश लिटरेचर में A Tale of Two Cities पढ़ ली, या हमने द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो पढ़ ली, बट उसके बाहर इट्स सीन के बस ये पढ़नी है, या क्लिफ नोट्स पे जाके उसकी समरी पढ़ ली, एंड यू गुड टू गो. So that has to change as well. Maybe encourage the students to read from a younger age. That's also important. और तीसरा ये है कि हाँ, books are expensive. The government, not maybe just the government, but there has to be a solution where books might become cheaper, have to become cheaper. But उसके साथ साथ, if I'm thinking right now, libraries have to play a very important role, because there's a collection of books and you pay a nominal fees, and you go in, take out a book, you read it a month, you give it a month, and you give it back. There are videos, especially Balochistan में, I think कोयटा की है, जहाँ पे सिर्फ एक ही लाइब्रेरी है और हर सुबह वहाँ पे रश मचा होता है कि लोग जा रहे हैं, and you don't find space to sit if you're late. सुबह 9 बजे यहाँ लाइब्रेरी खुलती है, and you can see a long line of people sitting there. उसके साथ पेशावर में not पेशावर, KPK में गुरुद्वारा है, that has been turned into a library. So there are small libraries, but उसके साथ साथ स्टेट या कोई सिटी लेवल पे कोई बड़ी लाइब्रेरी नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि प्रमोट करते हैं. CDA ने बनाई हुई हैं छोटे छोटे सेक्टर्स के अंदर, बट उनके हालात भी काफ़ी बुरे हैं. इवन आई वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट CDA मेंटेन्स अ लाइब्रेरी. सो या सी, दैट्स द इशू. यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि लाइब्रेरीज हैं, तो दैट हैज़ टू चेंज एज वेल. और उसके साथ साथ जो रीडिंग कल्चर है, जो लोग पढ़ते हैं, उनको भी, इंक्लूडिंग मी स्पेशली, हैव टू रियलाइज दैट बाय जजिंग पीपल हु रीड अ स्पेसिफिक बुक दैट वी डोंट लाइक puts them off. For example, I'll be honest, and this might be a bit of a controversial thought, but I don't read much of Urdu literature these days, and it's nothing to do with कि यार आप अंग्रेजी बोलते हो या इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हो. It's more कि because I don't like what is coming out of Urdu literature these days. उसमें sectarianism promote हो रहा है, उसमें एक किस्म का religious thought promote होती है, ideological है, और भी मसले हैं. So I have an issue with that. But the thing is that if you read a certain type of book, let's say I take 40 Rules of Love. अगर आप किसी बंदे से बात कर रहे हो, वो कहता है यार मैंने किताबें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी, मैंने 40 Rules of Love पढ़ी हुई है. And if a person in that conversation who has read more books, chances are that they might judge that person and tell them ये कौन सी किताब हुई है, कुछ उस तरह का, and that will put that person off. We have to discuss why these books that we think are bad and why are they bad and how can we change that. क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने सिर्फ वो पढ़ी होती हैं जो बहुत मशहूर किताबें हैं. वो मशहूर इसलिए होती हैं क्योंकि लोग ज़्यादा पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये तो बिलावल वाली बात हो गई ना, बारिश होती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है. बट इट डजंट चेंज द फैक्ट कि लेट्स से लोग हैरी पॉटर पढ़ते हैं, इट बिकम्स मोर फेमस. जो बंदा किताबें नहीं पढ़ता, ही विल ऑफ कोर्स बी ड्रॉन मोर टू हैरी पॉटर इवन इफ इट्स बैड एज कम्पेयर टू लेट्स से व्हील ऑफ टाइम, विच आई बिलीव इज़ अ बेटर तो बुक सीरीज़. तो उसके साथ साथ, फॉर एग्जाम्पल, पीपल टेंड टू रीड द एल्केमिस्ट और एनी अदर ऑफ हिज बुक्स, but because they have become famous or people discuss them a lot. So to change the narrative or to draw people in, we have to tell them, yeah, if you feel that these books are not as good as the others that you have read, then you need to tell these people why do you think that, instead of judging them over reading this. Because as from my personal experience as well, as we grow older, बुक्स पढ़ने का टाइम कम हो जाता है. अदर लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ या अदर लाइफ चॉइसेस, टेक प्रेफरेंसेस, या टाइम बिल्कुल नहीं मिलता. तो यू ऑलरेडी हैव अ फिक्स्ड लिमिटेड टाइम टू रीड इन, एंड पीपल वुड रादर गो फॉर अ बुक दैट इज़ गुड और दैट इज़ वेल नोन, इंस्टेड ऑफ taking their time on a book that is not known to them or the author himself or herself. तो उसके अंदर यही बनता है कि you have to tell them that why do you think a specific good book is better than the other one. So it's to promote a reading culture. I think basically people who read have to step forward and ask people to read. Thank you.